Very good evening, friends. I think 16 people have already joined. So let us start the meeting without waiting for more. I've made CA Kriti Chadda ji as co-host, so she will keep admitting people. But all the participants shall stay muted, just to avoid any hiccups. Before we start the second day session, let us see something on dispute. Dispute is referred to in section 5, subsection 6. Dispute includes a suit or arbitration proceedings relating to existence of the amount of debt, quality of goods or services. So first thing in dispute could be the amount itself. Whether the amount which is stated to be in default, whether that amount itself exists or not. Second could be regarding the quality of goods or services. The quality of goods or services supplied may not be of quality commensurate with the agreement. And third could be the breach of representation or warranty. So these are the three conditions to qualify as a dispute. Now let us see some of the things. If we go back to the history, the notes on clauses in the Insolvency and Bankruptcy Code 2015, they explained the reason for this section as follows. Clause 5 sets out various definitions used in Part 2 of the code, which deals with insolvency resolution and liquidation of corporate persons. As we know, the background of this IBC code is Vishwanathan Committee report. Most of the recommendations of Vishwanathan Committee report were admitted as it is. But there is a change in the definition of dispute from what was there in Vishwanathan Committee report and what was emerging as final. In the draft bill, section 5 subsection 4 was there, so it defined dispute means a bona fide dispute or arbitration proceeding. But we noticed that the term bona fide is missing. In Vishwanathan Committee report, it was said that dispute means a bona fide suit or arbitration proceeding regarding the existence or the amount of debt, the quality of a good or service, or the breach of a representation or warranty. This definition of dispute, it underwent a change when the Insolvency and Bankruptcy Bill was introduced in the Lok Sabha. The meaning definition of dispute was changed to inclusive definition. In Vishwanathan Committee, it was said dispute means. When you say means, it means you have exhausted all the possibilities. And the section itself has attained some sort of finality. But if you use the term includes, then it means there is a scope for inclusion of something more as well in future. The meaning definition of dispute was changed to inclusive definition, and the word bona fide was also removed before suit or arbitration proceeding, and the word regarding was replaced with relating to. In the Vishwanathan Committee report, the wording was dispute means was replaced by includes, bona fide was removed, bona fide suit or arbitration proceeding regarding, and regarding was replaced with relating to. The definition of dispute in its now it is dispute includes a suit or arbitration proceeding relating to existence of the amount of debt, quality. I hope all of you are having the copy of Insolvency and Bankruptcy Code with you. I suppose existence or the amount of debt, quality of goods or service, the existence of, and third is breach of a representation or warranty. The joint committee, it recommended replacement of the word or with of in subclause A, which was accepted. In the earlier clause, it was or. Now, it was replaced with the word of. In the original Vishwanathan Committee report, it was existence or the amount of debt. Now it was existence of the amount of debt. So now this revised definition.
Because this BLRC report is also in our course, I have already placed on my website the BLRC committee report as well. So you can go through, you can download, you can, some of the members were asking whether copy of this Bear code is available on IBBI website. So copy of Bear code is available there. Copy of all regulations are available on the website of IBBI. But for your ease and convenience, we have also placed on our website the copy of the Bear code as amended up to September, I think, September 2020, and copy of all the regulations are also there. So now let us see the meaning of dispute. We'll just devote 5-10 minutes on this. The definition of dispute under the code is not exhaustive but inclusive. As I said earlier, the word used was means, but now the word is includes. So it includes a suit or arbitration proceeding. In order to be dispute, it should relate to the existence of the amount of debt. Earlier in the committee report, it was existence or the amount of debt. Now it is existence of the amount of debt, quality of goods or service, or the breach of a representation or warranty. The definition of dispute being inclusive deserves enlargement. Naturally, to this extent, a law expounded by the Supreme Court is clear and unambiguous. Insofar as illustrative disputes cited in the definition, the enlargement is possible to include disputes which are not a subject matter of any pending litigation or legal proceeding. Now let us see the meaning of dispute. If we see the ordinary meaning of dispute, we'll have to refer to the dictionary. Dictionary defines this dispute as a disagreement or argument. It might be a conflict, a controversy, conflict of claims or rights. As somebody is asserting a right, the other is disputing it. So these are the definition. These are the various definitions of dispute. So dispute basically means that there may be a difference of opinion as to the future performance of a contract. For example, one party may be denying that any further performance is due on the ground that the contract has been discharged by repudiation or frustration. Or it may be common ground that the contract is subsisting, but the parties may be in a dispute about whether a particular act would constitute a valid performance or whether one party is entitled to give a particular order or exercise an option in a particular way. If we see some of the illustrations based on the ordinary meaning, so disputes between the parties can be of the following types. There may be representative suits under Order 1, Rule 8 of CPC, which is in our course, which involve public interest or interest of numerous persons who are not parties before the court. Dispute may be relating to election to public office. Dispute may be relating to grant of probate or letter of administration, but these are of academic interest. In IBC, it is basically money matters, as we all understand. But we should give it a contextual meaning. Because once we see the ordinary meaning, but then we have to read the any term in relation to the particular context in which it is used. Now here we are studying IBC. What is the purpose? Purpose is to resolve insolvency, and if all possibilities are exhausted, then to look for a rapid liquidation. This is the basic intent of this IBC. So it presupposes the existence of relationship of creditor and debtor between the parties. So unless such a relationship exists, the process of insolvency resolution and liquidation or bankruptcy cannot start, except in case of voluntary liquidation, which we'll study later. In case of voluntary liquidation, naturally the question of dispute is not relevant. The essential conditions of existence of relationship of debtor and creditor, we can see from various definitions of the code. Definition of claim is there: corporate debtor, creditor, debt, default, financial information, financial position, transaction, financial creditor, financial debt, operational creditor, operational debt. So the starting point of initiation of corporate insolvency resolution process is the creditor, financial or operational. Existence of default by the corporate debtor for the debt owed to the creditor is the trigger for commencement of CIRP. The definition of default and debt
it assumes the relationship of a debtor and creditor. A relationship of debtor and creditor is subsumed in a contractual relationship. So dispute must arise out of contractual relationship of debtor and creditor between the parties. The debtor and creditor relationship, it will give rise to a debt out of a transaction between them. The existence of debt, it may lead to a default, which in turn will trigger the initiations of CIRP or liquidation under part 2, which we are studying now. If the financial or operational creditor approaches the adjudicating authority, the existence of dispute between the financial creditor and operational creditor and the corporate debtor relating to financial or operational debt, it presents the debtor a handle to oppose the initiation of CIRP. In other words, the dispute must be in relation to the debt owed and not otherwise. So we have to see the contextual meaning in case of IBC. Another question we have to see whether these relative conditions, they are necessary prerequisite for non-enumerated dispute. Sir, if you can explain, sir, what is a default? Is it connected? Actually, default is referred to in section 4. Okay, sir. Section 4 says when default is triggered. And if we see the definitions, let us see the definition. Default means actually inability to pay. Basically, when a debt is due and it is not paid, then it is considered to be in default. Section 3 talks of default. Default means non-payment. Section 3, subsection 12. Default. Sir, small, any part or whole part? It could be anything, na, sir? थोड़ा भी ड्यू हो या पूरा भी ड्यू हो, कोई उससे तो नहीं. Default is default, na, sir? Yes, definitely. Default means no. I'm reading the definition first, then we'll discuss. Section 3, subsection 12. It talks of default. So default means non-payment of debt when whole or any part. So your answer comes here. Yes, sir. When whole or any part or installment of the amount of debt has become due. So another thing is it could be whole or any part or installment, and then it should be due and payable and is not paid by the debtor or the corporate debtor as the case may be. So this is the definition of default. So default means, so they have exhausted all the possibilities. So whenever they use the word means, so it means the section or the subsection, it has attained finality. If we want to include something else, then some compulsive argument should be there. Otherwise, so this definition is considered exhaustive if we use the word means. So had the word had they used the word includes, then there was possibility of incorporating more conditions to this. So section 3, subsection 12, it is an exhaustive definition. Default means the non-payment of debt when whole or any part or installment of the amount of debt has become due. It means that when the debt is not due, then it is not a default even if we refuse to pay and is not paid. So whenever it is due and it is not paid, whether whole or part or any installment. We have earlier seen regarding dispute that simply if you say that an FIR is being lodged, FIR has been lodged, it itself will not mean that dispute exists. So dispute, it must be proved by the circumstances. The first relational condition of dispute is that it may relate to the existence of the amount of debt. So if we question the amount itself, then dispute could be there. So when the quantum of debt is questioned, if we question the quantum itself, when the quantum of debt is questioned or doubted, this goes to the root of the existence of debt and becomes a dispute. Because we have seen the definition of dispute. Section 5, subsection 6. आप एक बार section 5, subsection 6 देखिए दोबारा से. Dispute includes a suit or arbitration proceeding relating to the existence of the amount of debt. Suppose we question the existence itself.
then naturally it is a dispute. The reason for non-existence of debt could be wrong or incorrect calculation of the debt, or that the claim has not given rise to the debt. That is, it has not become due. Deferment of debt under mutual settlement or agreement or by operation of law, it will amount to dispute as to the existence of the amount of debt. A mere right to payment under a contract or right to remedy for breach of contract does not give rise to debt. It remains a claim until it becomes so. So we have to make a distinction between a claim and debt as well. There may be a claim, but that claim may not give rise to debt. Regarding dispute relating to quality of goods or service. Now regarding quality of goods or service, naturally it can be raised only in case of operational debt, but because in case of financial debt, there cannot be any question as to quality of goods or service. So in this case, how it will trigger? So if the debtor raises a dispute as to the quality of goods or service, the attempt by the operational creditor to trigger the corporate insolvency resolution process will come to a naught. Naturally, this cannot be enforced. Section 9 application cannot be entertained if the debtor raises a dispute. Suppose we are a professional, we have raised a bill, and the client raises a dispute as to the quality of the service we have rendered. Then, of course, we cannot file an application under Section 9 as an operational creditor. Although we have rendered, naturally we are open for a civil suit, but this Section 9 application will not be entertained because he has raised a doubt as to the quality of service which we have rendered. Now, the quality of goods or service, it refers to the goods or service below a certain standard or not matching the agreed. The quality itself is a relative concept. So we'll have to see what is considered to be the standard quality. Naturally, our accounting standards, auditing standards will prove some sort of guidance regarding the quality of service a professional has rendered. Similarly, there could be standards as to quality of goods as well. Suppose some ISO certification is there and all those things. So we have to see it from this angle regarding quality of goods or service. Third is regarding the breach of representation or warranty. Let us see this. Regarding breach of representation or warranty, it means a statement of fact or opinion influencing a party to enter into a contract. So this is termed as represent. So what is representation? Representation means that we are either issuing a statement of fact or opinion which is influencing a party to enter into a contract. We are representing something. A representation is made before the contract is entered into. A false representation may give rise to a dispute. So if the party proves that there was a false representation, then he has a right to rescind the contract. In this case, we will not be able to resort to the provisions of Section 9. Now, a warranty is an assertion or a statement of fact relating to the subject matter of the contract and usually forms part of the contract. If the statement turns out to be untrue, it gives rise to compensation of loss incurred by the recipient. If, however, the warranty is fundamental, the recipient may also get a right to rescind the contract. So for all these things regarding breach of contract or warranty, representation, we have to refer to the provisions of the Indian Contract Act, which is also in our syllabus. So whenever we study any term, we have to see all these things. Now let me start the presentation from where we left yesterday. Let me share my screen with you.
I think now my screen is visible to you. Now we will start from where we left. So you can discuss about, you can read about dispute in detail from various sources. This we all covered yesterday. Now regarding this amendment. Related party definition we had seen yesterday. Section 6 also. Section 6 says that whenever the corporate debtor, it defaults, either the financial creditor who has given financial assistance or operational creditor who has supplied goods or services, or the corporate debtor itself, it may initiate insolvency proceedings. And the expression default, it bears the same meaning in section 7 and 8 of the code. In section 7, application can be filed by the financial creditor itself or jointly, but you cannot join the amounts. It has to be in respect of a separate cause of action. Then section 7 says adjudicating authority will ascertain. Ascertaining here means examining the evidence on record, evidence which has been put up by the financial creditor. So the adjudicating authority will ascertain within 14 days whether default has occurred and no disciplinary proceedings are pending against the proposed resolution professional. So if these two conditions are satisfied, even without inviting the corporate debtor, even without specifically providing the corporate debtor an opportunity of being heard, by recording reasons in writing, the adjudicating authority may admit the application. But if there is no default or some disciplinary proceedings are pending, then it will reject the application, and before rejecting, it will give naturally opportunity to rectify the defect within 7 days. And this period is also directory, not mandatory. Another important thing, so for the purpose of admitting an application, default has to be ascertained as on the date of when the adjudicating authority is deciding whether default is there. Suppose default was there as on the date of filing of the application, but there is no default on the date of decision of the adjudicating authority, then the application will be rejected. Because in the meantime, the corporate debtor might have paid. There was a slight amendment to section 5. So in section 5 of the Insolvency and Bankruptcy Code, here the idea is that people should understand. So we are deliberately going a bit slow, but once we cross section 53, then we will increase the pace. In section 5 of the Insolvency and Bankruptcy Code, in clause 12, the proviso shall be admitted. So let us see what was the proviso earlier in section 5, subsection 12. Proviso was, so we are reading what was omitted. Earlier in section 5.12, there was a proviso provided that where the interim resolution professional is not appointed in the order admitting application under section 7, 9 or 10, the insolvency commencement date shall be the date on which such IRP is appointed by the adjudicating authority. Earlier, as we know, in case of an operational creditor, the name of the IRP need not be given initially. And in such a scenario, the adjudicating authority, which is the NCLT, it asks the IBPI. IBPI has already shared a panel with NCLT, and NCLT appoints an IRP out of that panel. So this was the proviso. Because in case of an application under section 7 or 10, the name of the IRP is already there. But in case of section 9, the name of the IRP need not be given. So there was a condition that what
Earlier, what was the scene? When the application is admitted. But then the question arose, the application has been admitted. Now this zero date has started, but IRP has not been appointed. So then they made this amendment that admission of application by the adjudicating authority or IRP is admitted, whichever is later. So this was the proviso. Now this proviso they have again deleted, because they assume that they will admit the application only once the IRP has been appointed. So this was the proviso earlier, and now in clause 15, now another amendment in section 5 is in clause 15. So let us see clause 15. Clause 15 says about the interim finance. So interim finance means any financial debt raised by the resolution professional during the insolvency resolution process period, and such other debt as may be notified. So this is the addition in section 5 clause 15. So interim finance, as we know, suppose a company has been admitted for CIRP. It means there is some financial stress in the company. Finance is not available in the company. So in such a scenario, the IRP can raise interim finance against the properties available. Naturally, if there are no properties, then no finance can be raised ordinarily. So this is the concept of basically interim finance. All the properties, they stand already mortgaged or hypothecated. So in such a scenario, what IRP does? IRP leaves for the secured creditors twice the amount of their debt. Suppose there is a property of 500 crores and the debt subsisting as on date is only 200 crores. So they will leave twice the amount of the debt as security. So 200 multiplied by 2, 400 crores they will leave. And on the balance of 100 crores, because the value of the property is 500 crores. So on the balance of the 100 crores, they can raise the interim finance even without asking the prior debtors, even without asking the secured creditors, because he has left twice the margin. And in case the existing secured creditors agree, they may even relinquish their security. In that case, all the property is available for creating a pari passu charge, or in case or a fresh charge for raising interim finance. This is the basic concept of interim finance. So in this case, 5 subsection clause 15, after the words during the IRP period, the words and such other debt as may be notified. So the central government reserved with itself that it may notify besides interim finance and such other, any such other debt which it may like to notify. So this was the amendment, not of much consequence. In clause 26, let us see clause 26. देखिए समझ में तभी आएगा जब आप कोड भी साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है, मैंने तो पढ़ाई हुआ है बार बार. अब आप सोचेंगे भाई सुनने से ही समझ में आ जाएगा तो मुश्किल होगा, और मैं धीरे धीरे ना आपको पढ़ने की आदत डाल दूंगा. भाई आप कोड सामने रख के पढ़ो, तभी इसमें समझ में आएगा. 526 देखते हैं. 526 क्या कहता है? 526 बात करता है रेजोल्यूशन प्लान की. ठीक है, तो रेजोल्यूशन प्लान मीन्स, एक तो आप देखिए कहीं भी मीन्स लिखा है, इंक्लूड्स लिखा है, क्या लिखा है? ठीक है ना. मीन्स अगर लिखा है तो ज्यादा एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मानी जाती है. तो रेजोल्यूशन प्लान मीन्स ए प्लान प्रपोज्ड बाय रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. So this was substituted for any person. Earlier, the term was proposed by the resolution applicant, but then it was substituted for any person by the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Act 2018. So resolution plan means a plan proposed by resolution applicant for insolvency resolution of the corporate debtor as a going concern in accordance with Part 2. An explanation now is there. So what is this explanation? For the removal of doubts, it is hereby clarified that a resolution plan may include provisions for the restructuring of the corporate debtor, including by way of merger, amalgamation, and demerger.
I told you yesterday also that sometimes what these promoters do, they float a number of companies which are interdependent. And such companies, they don't have any independent existence, or even they may not be able to find an independent buyer for whatever activity, because one company is producing and the other company is consuming that production. So they have formed a chain of companies in such a way that the production of one is the consumption of the other, maybe to increase the turnover, or there may be so many things. So in such a scenario, finding an independent buyer for one of such companies may not be a feasible proposition. So in such a case, they look at resolution as a whole. Suppose all the companies are merged together. So if all the companies are amalgamated, or in case there are independent divisions, then demerger also may be an option. So this is the basic idea behind inserting this explanation in section 5. Now let us see something in section 7. Let us go to section 7 now. What was the amendment? In section 7, as we know, section 7 talks of application by a financial creditor in respect of a financial assistance. And so it gives the authority to financial creditor to file an application under section 7. So in section 7, it says, section 7 is quite lengthy. Let us see. So section 7 says initiation of corporate insolvency resolution process by financial creditor. So this says a financial creditor either by itself or jointly with other financial creditors. This other financial creditors, it was substituted for other financial creditors in IBC second amendment itself, or any other person on behalf of the financial creditor as may be notified by the central government may file an application for initiating CIRP against a corporate debtor before the adjudicating authority when a default has occurred. Default is defined in section 4, provided. Now this is the insertion. Provided that for the financial creditors referred to in clauses A and B of subsection 6A of section 21, an application for initiating CIRP against the corporate debtor shall be filed jointly by not less than 100 of such creditors in the same class, or not less than 10% of the total number of such creditors in the same class, whichever is less. What this means? As we know, in case of real estate projects, because we have to see the context. The context was the amount of default was 1 lakh only. There is a particular investor. I am deliberately using the term investor. There is a particular investor in real estate project. Because we know sometimes people invest in a real estate project just for investment purposes only. They don't have the intention of buying or possessing that house. In such a scenario, if God forbid, suppose a default occurred, then one financial creditor, one home buyer, because home buyer is a financial creditor as we know. So one home buyer could drag the company to CIRP process, which could be a big deterrent. So they say that in case of financial creditor, they carved out a class. They carved out a class in section 21. So let us go to section 21. Section 21 says about the committee of creditors. 6A, subsection 6A and clauses A and B. Section 6A, it talks of where the terms of the financial debt extended as a part of consortium arrangement or syndicated facility provide for a single trustee, because it talks of authority. And 6A, clause A and B, it talks of form of securities or deposits, because
there may be a class of creditors. They have envisaged two classes of creditors. One is in case of deposits or securities. Suppose there are some fixed deposit holders, so they represent a class in themselves. Similarly, in case of real estate projects, so they have specified the limit that at least 100 creditors or 10% for resorting to Section 7 provisions. So in Section 7 of the Principal Act, so this is the basic idea. In subsection 1, before the explanation, the following provisos shall be inserted, provided that for the financial creditors referred to in clause A and B of subsection 6A of Section 21. It talks of 21 6A. A talks of securities or deposits, and B, it talks of it is a general type of section. It is owed to a class of creditor or exceeding. So basic idea behind this is real estate. They have in mind real estate projects and deposit or fixed deposit holders. So provided for the financial creditors referred to in clause A and B, an application for CIRP shall be filed jointly by not less than 100. So they have restricted that on simply one financial creditor cannot file an application. Not less than 100. So 100 is the number, or not less than 10% of the total number of such creditors, whichever is less. Whichever is less is also important. So it could be 100 or not less than 10%. Suppose one person represents more than 10%, 10% or more, then he can file an application. So either the amount should be substantial or the number should be substantial for initiating an application under Section 7. So this is the basic intent. Now we can go to Section 8. You can read all these sections in detail. I have briefly explained you what was the intent. Section 8 now. So operational creditor. Operational creditor, as we know, who is an operational creditor? An operational creditor is a person who has either provided goods or services. So operational creditor on occurrence of default. Default is referred to in Section 4. On occurrence of default, delivers a demand. Amount of default is referred to in Section 4, and Section 3, it talks of definition of default. So operational creditor on occurrence of default. So you have to read again and again the definitions before understanding any section. So all the answers are there. It is a beautifully worded IBC code. The code is beautifully worded, and it gives answers to all the questions which you might have in mind. So operational creditor on occurrence of default, just you have to enjoy the reading. So operational creditor on occurrence of default delivers a demand notice to debtor or a copy of unpaid invoice. So it is either a demand notice or a copy. At times, suppose we are a professional. We don't raise invoices daily, but we are rendering services on daily basis. So there may be a situation where we might not have issued an invoice, but we might have rendered service. So in that case, if no invoice is there, then we will issue a demand notice. And in case there is any unpaid invoice, then we will attach a copy of the unpaid invoice. The corporate debtor within 10 days of the receipt of demand notice. 10 days period is allowed to the corporate debtor within 10 days of receipt of the demand notice. So now what is the duty of the corporate debtor? He will bring to the notice of the operational creditor that some dispute is pending, or record of pending suit. Some suit is already pending. Arbitration process. It may or may not have been filed before receipt of such notice, but it should be pending. Once this demand notice or unpaid invoice is received, then dispute cannot be raised. It should be already existing, although it might or might not have been filed. So there is difference between existence and filing. So we have to understand this concept. Or repay the amount, or if he feels convinced that, okay, he omitted that amount, then he might even repay the amount or send attested copy of the record of electronic transfer or attest copy of record of the encashed check by the OC. So he has to respond positively. Either he will bring the existence of dispute, or he will repay the amount, or will produce the evidence of payment. Suppose he doesn't act, or he is in jail, or he is not traceable, then the application under Section 9 can be filed.
So after the expiry of 10 days from the date of delivery of notice or invoice, the operational creditor will file application to the adjudicating authority. Copy of invoice, he will attach copy of invoice demanding payment or demand notice. He will attach an affidavit also that there is no notice given by the corporate debtor relating to a dispute of the unpaid operational debt. And earlier, there was another condition of attaching a copy of certificate from the bank or financial institution or information utility which is maintaining accounts of the operational creditor. But now that condition has been made optional, and if that certificate is available, then it's okay. Otherwise also application can be admitted. So this is regarding section 8. Now section 9. Operational creditor, he may means it is optional for him to either propose a resolution professional to act as IRP, or he may not even propose a name. In case he doesn't propose a name, then NCLT will make a reference to IBBI, which will revert within 10 days. So wherever reference to IBBI is there, normally the period is 10 days. They ask questions about this period as well. So adjudicating authority, again the time with adjudicating authority is 14 days. So adjudicating authority within 14 days of receipt of application may admit or reject based on the evidence given as per section 8 conditions. Before rejecting, it will give notice to rectify the defect, and within 7 days of receipt of such notice, and the 7 days period is also directory, not mandatory. Another important thing to remember in section 9 is no person, including the shareholder or the personal guarantor, they have a right of being heard. So nobody has a right of being heard at the stage of admission of application. So if a shareholder comes to know that an application is being filed under section 7 or 9, then he does not have a right of being heard at this stage. So application under section 7 or 9 or 10 is not a money claim or suit. The adjudicating authority, if satisfied, is not required to write a detailed decision. But naturally, if they do not provide an opportunity to the financial creditor or to the other party involved, then they record the reasons in writing why they are not providing such an opportunity. So detailed decision is not required because it's not a money claim. Next is section 10. In case a corporate debtor has committed a default. Now, this default, it has to be differentiated from voluntary liquidation, because section 10 application can be made only if the corporate debtor has committed a default. But if a corporate debtor has not committed a default and he wants to go in for the provisions of this part 2, then he has to file an application for voluntary liquidation. So voluntary liquidation is separate, section 10 is separate. So in case a corporate debtor has committed a default, the corporate applicant, here the word used is corporate applicant, not the corporate debtor. What it means? It means either the company or the key managerial person or CEO or CFO or director or any person who is controlling the company, he can file an application. The word used here is corporate applicant. Definition is there. So corporate applicant on behalf of the corporate debtor may file it, and they may even ask questions on who is included in corporate applicant and who is not. The corporate applicant on behalf of the corporate debtor may file application to the adjudicating authority. So what they have to do? Special resolution passed by the shareholders of the corporate debtor or 3/4 of the total number of partners in case of LLP. So special resolution by shareholders or 3/4 in case of LLP. Books of accounts they have to give, other documents as may be specified, they have to be submitted along with the application. And name of the RP who is agreeable to act as IRP, consent of IRP is also filed. And he also certified that no disciplinary proceedings are pending against him. So after satisfying all these conditions, section 10 application can be filed. In an application filed under section 10, financial creditor or operational creditor, he may dispute that there is no default. Suppose a corporate debtor or a corporate applicant has filed an application under section 10. There is no real default. So the financial creditor or the operational creditor, he may dispute that there is no default or that the debt is not due and is not. ये तो जी मिलॉर्ड जबरदस्ती हमें ये जा रहे हैं IBC में, कोई डिफॉल्ट है ही नहीं, कंपनी सॉल्वेंट है, ठीक है.
However, the adjudicating authority has no option but to admit the application if the conditions laid down are satisfied. So if the conditions laid down are satisfied, देखिए शुरू में ही लिख दिया it has committed a default. डिफॉल्ट कमिटेड जरूरी है, वो दिखाएगा प्रूफ उसका, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा या 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देगा, ठीक है, ये सब करने आईआरपी का नाम दे देगा और सर्टिफाई करा देगा आईआरपी से कि नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, ठीक है। चाहे वो डिस्प्यूट करता रहे फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशन क्रेडिटर के जी डिफॉल्ट नहीं है ये, लेकिन डिफॉल्ट तो उसने बता दिया ना ऊपर में, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन एडमिट करनी पड़ेगी अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो। वही फिर 14 डेज का पीरियड एडमिट और रिजेक्शन, और आपको 7 दिन का नोटिस देगा टू रेक्टिफाई एनी डिफेक्ट, ठीक है। सेक्शन 10A, सेक्शन 10A अभी क्या हुआ कि ये ड्यूरिंग दिस कोविड, सो सस्पेंशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, इसमें ये कहा गया कि भाई सेक्शन 7 की एप्लीकेशन है, सेक्शन 9 की, सेक्शन 10 की अभी नहीं हो सकती, ठीक है। पहले उन्होंने 6 महीने कहा था, फिर 6 महीने और बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसमें ये कहा कि भाई अभी जो है फ्रेश एप्लीकेशंस नहीं होंगी, लेकिन पुरानी एप्लीकेशंस विल कंटिन्यू, ठीक है। सेक्शन 11, सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 कहता है कि पर्सन्स नॉट एंटाइटल्ड, हम ऐसा करेंगे, देखिए एक तो ये है कि जब 1 घंटा तो हम करेंगे डिस्कशन, उसके बाद देन विल ओपन इट फॉर क्वेश्चंस, और नेक्स्ट डे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना उनको हम इनिशियली दोबारा से थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 कहता है कि पर्सन्स हु आर नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। इसमें बेसिकली वही लोग हैं जिनका ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है, या 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए, या कोई उन्होंने जो रेजोल्यूशन प्लान है उसकी कंडीशंस को वायोलेट कर दिया, ठीक है, या किसी कॉर्पोरेट डेटर का लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया, तो दे कैन नॉट मेक एन एप्लीकेशन अंडर दिस, ठीक है। भाई अभी अभी आप ऑपरेशन रूम से निकले हो तो दोबारा आप एडमिट नहीं हो सकते हॉस्पिटल में, ये बेसिक इंटेंट है, आपको इस तरह से याद कर लेना है। No proceeding shall be initiated against IRP, RP for the action of corporate debtor prior to the insolvency commencement date. Naturally, an immunity is granted to the IRP or RP for the action of corporate debtor prior to the insolvency. भाई जब वो आया नहीं था IRP, RP पिक्चर में, तो उसके अगेंस्ट में तो कोई प्रोसीडिंग हो ही नहीं सकती ना उस पर, ठीक है। और एक और बात इसमें कहा कि रेजोल्यूशन प्लान हैज टू बी अप्रूव्ड बाय COC, ठीक है। उसके बाद में कुछ फॉर्म्स हैं, फॉर्म A, B, C, D, ये आपको याद करने हैं। फॉर्म ए इसमें पब्लिक अनाउंसमेंट का फॉर्म है, और फॉर्म बी क्या है, आपको ना पार्ट वाइज फॉर्म है। जैसे पार्ट 1 में कुछ अलग फॉर्म का, पार्ट 1 का फॉर्म ए अलग है, और पार्ट जो 2 का फॉर्म है वो अलग है, पार्ट 3 में फॉर्म कुछ अलग होगा, इस तरह से। तो आपको पार्ट वाइज भी देखना है कि CIRP में कौन से फॉर्म ए का क्या मतलब है, जो इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल्स की जो बैंक्रप्सी है या इंसॉल्वेंसी, उसमें फॉर्म ए कौन सा है। इस तरह से आपको एक कंपैरेटिव चार्ट बना लेना है, चार्ट से आपको याद करना है। अभी हम यहाँ CIRP की बात कर रहे हैं, तो CIRP में फॉर्म ए इज ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट बाय IRP, फॉर्म बी में फिर प्रूफ ऑफ क्लेम है बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। देखिए ऐसा एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड इन द कोड, सिर्फ अटैचमेंट्स में डिफर। आपको क्या है, इस फॉर्म के साथ अटैचमेंट लगानी है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, बट समटाइम्स दे हैव अलाउ द कम्युनिकेशन बाय पोस्ट एज वेल, ठीक है। जनरली इट इज इन केस ऑफ वर्कमैन और एम्प्लॉइज, दोज हु मे नॉट बी मेंटेनिंग द इलेक्ट्रॉनिक मेल एटसेट्रा। तो फॉर्म बी में क्या है, ये प्रूफ ऑफ क्लेम है बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर एक्सेप्ट वर्कमैन एंड एम्प्लॉइज, ये पोस्ट से भी दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली भी दे सकते हैं। फिर फॉर्म सी जो है, ये प्रूफ ऑफ क्लेम है बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, इलेक्ट्रॉनिक मींस, ठीक है। फिर फॉर्म डी में प्रूफ ऑफ क्लेम बाय वर्कमैन और एन एम्प्लॉय, ये भी आपका पोस्ट से हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक से हो सकता है। फॉर्म ई में क्या है, प्रूफ ऑफ क्लेम ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मान लीजिए कंपनी में 1000 वर्कर है, ठीक है। अब 1000 वर्कर तो अलग से क्लेम फाइल करेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, कर सकते हैं, वो भी फाइल कर सकते हैं, और फिर उनका के एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी वो फाइल अपना कर सकते हैं। फिर फॉर्म एफ में क्या है, प्रूफ ऑफ क्लेम अदर देन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर। भाई कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो ना फाइनेंशियल क्रेडिटर में आते हो ना ऑपरेशनल क्रेडिटर में आते हो, ठीक है ना, उनके लिए फॉर्म दे दिया फॉर्म एफ। फॉर्म एफ ए क्या दिया, ये दे दिया एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल, और फॉर्म जी दे दिया इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। फिर फॉर्म एच दे दिया कंप्लायंस सर्टिफिकेट का। तो ये सारे आप फॉर्म्स को एक बार देख लीजिएगा। सेक्शन 11 में क्या अमेंडमेंट हुआ, सेक्शन 11 में एक अमेंडमेंट हुआ, द एक्सप्लेनेशन शैल बी नंबर्ड एज एक्सप्लेनेशन 1 एंड आफ्टर, पहले क्या था, एक ही एक्सप्लेनेशन थी, तो जब एक ही एक्सप्लेनेशन होती है तो उसमें नंबर देने की जरूरत नहीं होती। अब उन्होंने 2 भी इंसर्ट कर दी, तो पहले वाले को जो एक्सप्लेनेशन था उसको कर दिया एक्सप्लेनेशन 1,
ठीक है ना, और सेकंड एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दी। तो इसमें ये कहा कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट ए कॉर्पोरेट डेटर रेफर टू क्लॉज ए टू डी फ्रॉम इनिशिएटिंग CIRP अगेंस्ट अनदर कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक कंपनी, ठीक है, वो दूसरी कंपनी के अगेंस्ट में CIRP स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, सेक्शन 11 में हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 11 में हमने ये पढ़ा था कि जो कंपनी जिसका CIRP चल रहा है वो ये एप्लीकेशन नहीं लगा सकती। कौन सी एप्लीकेशन नहीं लगा सकती? कंपनी कहां पर एप्लीकेशन लगाएगी? कंपनी तो सेक्शन 10 में ही लगाएगी ना एप्लीकेशन। ठीक है, लेकिन इस अमेंडमेंट में क्या कहा? इसमें ये कहा कि जिसकी CIRP चल रही है वो दूसरी कंपनी के अगेंस्ट में एप्लीकेशन लगा सकती है। मतलब हमने ये कहा था सेक्शन 11 को याद करने के लिए, अगर आप हॉस्पिटल में बैठे हो तो अभी आप हॉस्पिटल में ही हो, डिस्चार्ज वहां से हुए नहीं, ठीक है ना, तो आप आराम से रहो, अभी आप ज्यादा हरकत मत करो। लेकिन इसमें ये कहा कि दूसरे को आप इन्वॉल्व कर सकते हो। मतलब अगर आपकी CIRP चल रही है तो जो भी क्लॉजेस A to D में दिए गए हैं, A to D में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि जिसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है या 12 महीने नहीं हुए या कोई वायलेशन कर दिया या लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया, वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते अंडर IBC। यहाँ क्या कहा? यहाँ कहा कि भाई दूसरी कंपनी के अगेंस्ट में आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, अपने अगेंस्ट में नहीं कर सकते। ठीक, चलिए आगे। सेक्शन 12, सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 टाइमलाइन की बात करता है। 180 डेज, वन टाइम एक्सटेंशन 90 डेज। एक्सटेंशन के लिए आपको क्या करना है कि रेजोल्यूशन पास करनी है विद 66%, और ये एक्सटेंशन भी वन टाइम ग्रांट होगी। कोर्ट्स के सामने इशू आता था कि भाई ये जो 180 डेज है या विद वन टाइम एक्सटेंशन है उसमें प्रोसेस पूरा होता नहीं था। ठीक है भाई, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि आप उसमें फिर क्या कोर्ट्स ने रास्ता निकाला कि वो जो लिटिगेशन टाइम इन्वॉल्व होता था, जो विच वाज लॉस्ट इन लिटिगेशन, उसको वो एक्सक्लूड कर देते थे। भाई आपने एक्ट में एक बात लिख दी 180 + 90, अब उसको देयर इज नो वे कि उसको आप कैसे करोगे। तो उसको बाईपास करने के लिए कोर्ट्स ने क्या रास्ता निकाला, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज ने, कि वो दे यूज्ड टू एक्सक्लूड सर्टेन टाइम, कि भाई व्हाटएवर वाज लॉस्ट इन लिटिगेशन। But now they have made it including litigation 330 days, and that also there are case laws on that also. Even 330 days is directory and not mandatory. Word used is mandatorily, but it should be read as ordinarily, as has been held in various decisions. वो हम case laws में देखेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या है 330 डेज है, लेकिन ये 180 डेज भी चल रहा है। अभी भी जो टाइमलाइंस हैं आपकी 180 डेज के हिसाब से ही चलती हैं। 180 डेज के बाद आपको एक्सटेंशन अप्लाई करना है, ये चीज ये एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। सेक्शन 12A क्या कहता है? सेक्शन 12A कहता है, पहले यहां पर भी देखिए ए आ जाता है ना सेक्शन में, उसका क्या मतलब है कि इनिशियली नहीं था, ओरिजिनली नहीं था, ये बाद में आया। तो पहले तो ये होता था एक बार एप्लीकेशन एडमिट हो गई तो क्या होता था, उसकी CRP होगी ही होगी। ठीक है, अब क्या कर दिया, अब इन्होंने कह दिया कि भाई अगर 90% वोटिंग पावर मेजोरिटी से आप एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकते हो। आपकी CIRP एडमिट हो चुकी है, उसके बाद में भी अगर आप चाहते हो कि भाई ये CIRP प्रोसेस में ना जाए तो यू कैन विड्रॉ योर एप्लीकेशन। ठीक है, इवन आफ्टर एडमिशन। पहले ये नहीं था, लेकिन उसके लिए कंडीशन है 90% वोटिंग पावर मेजोरिटी। ठीक, सेक्शन 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 ये कहता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में आफ्टर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, 9 and 10 इट में डिक्लेयर मॉरिटोरियम। ठीक है, अपॉइंट IRP और कॉज ए पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ इन्विटेशन ऑफ CIRP। इट शैल बी मेड इमीडिएटली आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ IRP। नॉर्मली इमीडिएटली लिखा है, बट विद इन 3 days। ठीक है, एंड कॉल फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स अंडर सेक्शन 15। अब यहां पर देखिए लिखा है सेक्शन 13 में पावर किसको दी गई? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ठीक है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पावर है पब्लिक अनाउंसमेंट की, लेकिन करता कौन है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल करता है। ठीक है, वो क्यों? वो इसलिए कि अभी जो IRP है, जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, अभी वो प्रोबेशन पे चल रहा है, अभी उसको पक्का नहीं हुआ वो। ठीक है, जब COC उसकी अपॉइंटमेंट को अप्रूव करेगी तब वो पक्का होगा, वो तो वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट माना जाएगा। तो यहां पर सेक्शन 13 में क्या कहा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास काम दे दिया ये सारा। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट आ गई।
तो सेक्शन 12 में क्या अमेंडमेंट आई? सेक्शन 12 में in section 12 of the principal act, in subsection 3, after the proviso, the following proviso shall be inserted, provided further. section 12 क्या कहता है? section 12 बात करता था 180, 90, ठीक है। अब इनमें ये कहा कि provided further that the corporate CIRP shall mandatorily, यहां पर लिखा है mandatorily, लेकिन इसके बाद में भी केस लॉज आ गए। तो उन केस लॉज में क्या कहा कि दिस वर्ड मैंडेटरीली शैल बी रेड एज ऑर्डिनरीली, ठीक है। ये नहीं कि भाई 330 दिन में नहीं हुआ तो कुछ हो जाएगा, 330 दिन के बाद भी चलता है, शैल मैंडेटरीली बी कंप्लीटेड, लेकिन मतलब देखा जाता है, मतलब देयर शुड बी जस्टिफाइबल रीजंस। ऐसे नहीं कि आपने 330 दिन एज्यूम कर लिया, कुछ आप एक्टिविटी कर ही नहीं रहे, उस केस में नहीं देगा वो। प्रोवाइडेड फर्दर, अगर प्रेसिंग सर्कमस्टांसेस हैं देन द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज विल अलाउ, but otherwise not. Provided further that the corporate insolvency resolution process shall mandatorily be completed with a period of 330 days, ठीक है, including any extension, ठीक है, and the time taken in legal proceedings। तो वो कहने लगे भाई सारी चीज इसमें डाल दो। आप कहते हो 180 के बाद 90 डेज के एक्सटेंशन के लिए आते हो, फिर आप कहते हो जी कुछ पीरियड एक्सक्लूड कर दो, तो सारा कुछ एक ही बार में काम खत्म करो, 330 दिन ले लो, ठीक है। Provided also that where the insolvency resolution process of a corporate debtor is pending and has not been completed within the period referred to the second proviso। अब क्या है, इसमें दो सिचुएशन हो गई। कुछ तो पहले वाले लोग थे जो 180 प्लस 90 में आ रहे थे, अब जब ये अमेंडमेंट आई कुछ ये 330 में आ गए, तो बाकी वालों का क्या होगा, ठीक है, जो बीच में चल रहे हैं, जो अभी जो अमेंडमेंट से पहले चल रही है, उस केस में क्या है, अगर कोई CIRP पेंडिंग है लेकिन जो कंप्लीट नहीं हुई, उसका क्या होगा, वो कहते हैं भाई 90 डेज में कंप्लीट कर लो आफ्टर द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस अमेंडमेंट, ठीक है। ये इतनी सी बात इसमें कही गई। अच्छा ये हो गया। उसके बाद में ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के रूल्स हैं। ये ना फिर मैंने इसको थोड़ा सा आप खुद पढ़िएगा पहले। इसमें क्या है, ये इसमें हमने दे रखे हैं इसके रूल्स, इसमें क्या क्या दिया हुआ देखो, जैसे कोड का क्या मतलब है, CI क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ ना सारे, जैसे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में रूल्स दे रखे हैं कि जो एप्लीकेशन देगा ना वो किस फॉर्म में होगी, क्या क्या उसमें लगाएगा चीजें, ये सारा आप अपने आप आपको पढ़ना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, तो डिमांड नोटिस कौन सी फॉर्म में होगा, कॉपी ऑफ इनवॉइस है वो कौन से फॉर्म में होगा, ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। जैसे अगर लिखा है कि भाई आपको कम्युनिकेट करना है तो कहां पर कम्युनिकेट करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस से, कैसे कम्युनिकेट करना है, हैंड डिलीवरी है, रजिस्टर्ड पोस्ट है, मतलब ये और डिटेलिंग है, जो हमारा कोड है, जो सेक्शंस हैं उनकी और ज्यादा डिटेलिंग है, ये इसमें रूल्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रूल्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और इसमें कोई भी आपने चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, वैसे ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारी चीजें इसमें, ठीक है। फिर ये फॉर्म्स दे रखे हैं कि फॉर्म में आपको पढ़ना है। फॉर्म में क्या करते हैं, वो आपसे क्वेश्चन दे के आस्क क्वेश्चन अबाउट पार्ट 1 कि पार्ट 1 रिलेट्स टू व्हाट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है। पार्ट 1 में दिए हुए पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। फिर पार्ट 2 में किसके पर्टिकुलर्स हैं, कॉर्पोरेट डेटर के, वो पूछ लेते हैं कि वेयर द पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर आर प्रोवाइडेड इन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, नन ऑफ द अबव, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको ये भी चीज याद में रखनी है, ठीक है। तो यू हैव टू गो थ्रू दिस फॉर्म्स वगैरह, ठीक है, ये सारा है इसमें। तो ये फॉर्म 2 है, ये सारी चीजें इसके अंदर दे रखी है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये सारे फॉर्म्स हैं। देखिए फॉर्म्स को इतना सारा डिस्कस करना तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट, आपको कुछ पूछना हो तो इसमें पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप इनको आराम से पढ़िए, उसके बाद में आप पूछिएगा। आगे चलते हैं, सेक्शन 13 तो हमने कर ही लिया मेरे हिसाब से, ठीक है ना, 13 हो गया। फिर 14 बात करता है कि आपको मॉरेटोरियम लग जाएगा। मॉरेटोरियम का क्या मतलब है, मॉरेटोरियम का मतलब ये है कि कोई भी एग्जिस्टिंग सूट चल रहा है कंपनी के अगेंस्ट में, चाहे कोई अटैचमेंट ऑर्डर इशू हो गया है, मान लीजिए इनकम टैक्स ने कोई अटैचमेंट ऑर्डर इशू कर दिया, तो वो भी स्टे हो जाएगा। द प्रॉपर्टी विल हैव टू बी रिवर्टेड टू द कॉर्पोरेट डेटर थ्रू IRP या RP, ठीक है। उसके अलावा कंपनी के फेवर में कोई सूट चल रहा है तो वो चलता रह सकता है। मान लीजिए कोई डिक्री एक्सिक्यूट करनी है कंपनी के फेवर में, तो जो चीज आती है आने दो, आने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रिजर्वेशन, इसका पर्पस क्या है IBC का, IBC का पर्पस ये है
टू प्रिजर्व द एसेट्स, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी फ्रिटरिंग अवे ऑफ द एसेट्स। कंपनी का कोई एसेट बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई और आ रहा है तो आने दो, आने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देयर इज नो बार टू सूट्स बाय द कंपनी, बट देयर इज बार टू सूट अगेंस्ट द कंपनी व्हिच इज इन सीआईआर। भाई एक आदमी जो है वेंटिलेटर पे बैठा हुआ है तो उसको डिस्टर्ब मत करो आप, है ना, वेंटिलेटर वाला आदमी जो मर्जी करे, ठीक है। सेक्शन 14 क्या कहता है? द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट विल डिक्लेयर मॉरेटोरियम टिल कंप्लीशन ऑफ सीआईआरपी प्रोसेस। कंप्लीशन का हमने पीरियड पढ़ लिया, 180 + 90 अब 330, और इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन ऑफ सच ऑर्डर पास्ट। इसमें आईबीसी में क्या हो रहा है? वी आर एग्जॉस्टिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। पहले तो हम देखते हैं रेजोल्यूशन हो जाए, अगर रेजोल्यूशन नहीं होता तो लिक्विडेशन हो जाए, ठीक है। तो इसमें मॉरेटोरियम कब तक लगेगा? टिल कंप्लीशन ऑफ सीआईआरपी और टिल इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है। लिक्विडेशन के बाद क्या होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या प्रोहिबिशन है? नए सूट फाइल नहीं हो सकते, पेंडिंग सूट कंटिन्यू नहीं हो सकते, कोई डिक्री अगर एक्सिक्यूशन के लिए पेंडिंग है तो वो नहीं हो सकती, ठीक है। आप कोई भी एसेट्स को कोई नया एनकम्बरेंस नहीं कर सकते, एलिनेशन नहीं कर सकते, डिस्पोजिंग ऑफ नहीं हो सकती, ठीक है। कोई एक्शन टू फोरक्लोज एनफोर्स एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट इंक्लूडिंग सरफेसी नहीं हो सकता, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय ओनर और लेसर वेयर सच प्रॉपर्टी इज ऑक्युपाइड और इन पोजीशन ऑफ सीडी, ठीक है। सिर्फ यही है कि जो गुड्स और सर्विसेज है इसके केस में एक्सेप्शन है कि सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज और एनी अदर ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें मोरेटोरियम ग्रांटेड टू कॉर्पोरेट डेटर विल नॉट अप्लाई टू श्योरिटी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी आदमी ने कोई गारंटी दे रखी है उस कंपनी के बिहाफ पर, तो उस पर आप केस फाइल कर सकते हो। उस कंपनी पर तो केस फाइल नहीं हो सकता, लेकिन किसी आदमी ने गारंटी दे रखी है उस कंपनी के बिहाफ पर, उस पर आप केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। ये मतलब है सेक्शन 14। सेक्शन 14 में अमेंडमेंट आ गया। सेक्शन 14 में क्या अमेंडमेंट आया? इसमें ये कहा कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन इट इज hereby clarified that notwithstanding anything contained in the law। इसमें एक केस आया था, उसमें ये कहा कि भाई देखिए ऐसा है, आईबीसी का मेन मकसद क्या है? आईबीसी का मेन पर्पस है टू रिजॉल्व द इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। आप कोशिश करते हो उसको एज ए गोइंग कंसर्न सेल करने की। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, जैसे कोई कंपनी ऐसी हो सकती है कि भाई मान लो कोई जैसे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, जैसे एयरसेल कंपनी, ठीक है। अब अगर उसका जो बेसिक लाइसेंस है उसको ही आप कैंसिल कर दोगे तो कौन खरीदेगा उसको, ठीक है। कोई कंपनी है जिसका बेसिक जो एसेट है, वही जो फोकल पॉइंट है वो लाइसेंस है या परमिट है, रजिस्ट्रेशन है, कोटा है, ठीक है ना, तो उसको ही अगर आप कैंसिल कर देते हो तो वो तो ठीक नहीं। हाँ, आप ये कंडीशन लगा सकते हो कि भाई ऐसा है, जो अब फ्यूचर में जो उसकी लाइसेंस फीस वगैरह है वो पेमेंट करता रहे। अगर वो भी नहीं पेमेंट करेगा फिर तो आप जो मर्जी एक्शन लो, ठीक है। पुराने वाले जो ड्यूज हैं उसके लिए आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। पुराने वाले ड्यूज तो वो सीआईआरपी के थ्रू फिर आएंगे वहां से। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द पास्ट क्लेम्स जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले के थे और जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के बाद के हैं, उन दोनों में यू हैव टू मेक अ डिस्टिंक्शन एंड यू ट्राई not to revoke the license, permit, registration, quota, which is essential, which is a prerequisite। अगर वो चीज ही बंद हो जाएगी तो फिर फायदा क्या रहेगा उसका? ये बात है। तो वो कहता है it shall not be suspended or terminated on the ground of insolvency subject to the condition that there is no default in payment of current dues। भाई ऐसा भी नहीं, इतना भी अन्याय ना करे कि करंट भी ना दे, करंट ड्यूज ले लो आप, उसे पुराने वाले के लिए कैंसिल मत करो, इतनी सी बात है, ठीक है। फिर 2A क्या कहा? 2A में कहा कि वेयर द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एज केस में भी कंसीडर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्रिटिकल टू प्रोटेक्ट। देखिए ऐसा है, पहले ये वर्ड यूज था इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, अभी यहां पर 2A में क्या हो गया? क्रिटिकल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जिसमें आईआरपी आरपी वो क्या, इट कंसीडर्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्रिटिकल टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व the value of the corporate debtor and manage the operations of such corporate debtor as a going concern, then it shall not be suspended or terminated, ठीक है। उसमें भी वही कंडीशन है कि भैया आप करंट देते रहना, ऐसा नहीं करंट भी ना दो, ठीक है। फिर सब क्लॉज 3 में फॉर क्लॉज ए द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, नेमली such transactions agreements or other arrangements as may be notified by
सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद एनी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। तो ये कुछ बेसिकली अमेंडमेंट्स है सेक्शन 14 में। फिर सेक्शन 15 आता है। सेक्शन 15 टॉक्स ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट कि व्हाट विल बी द कंटेंट्स ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। कंटेंट्स रहेंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर रहेगा, नेम ऑफ द अथॉरिटी अंडर विच कॉर्पोरेट डेटर इज इनकॉर्पोरेटेड, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम रहेगा, डिटेल्स ऑफ आईआरपी रहेंगे। डिटेल्स में एक्चुअली वो दे कैन मेक 2 ईमेल आईडीज। एक तो उनका ईमेल आईडी रहता है जो आईबीबीआई के पास भी रजिस्टर्ड है, एक फिर ये कि डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व है सीआईआरपी में, तो दे कैन मेक प्रोसेस वाइज ईमेल आईडी आल्सो। लेकिन जो दोनों ईमेल आईडीज हैं उनको सभी जगह कम्युनिकेट करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मेल्स आती हैं। तो पेनल्टीज फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम आर देयर एंड डेट ऑन विच सीआईआरपी प्रोसेस विल क्लोज 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एडमिशन। तो ये बेसिकली कुछ कंटेंट्स हैं जो पब्लिक अनाउंसमेंट के कंटेंट्स हैं, ठीक है। तो सेक्शन 15 तक आप आज कर लेते हैं, फिर सेक्शन 15 ऑनवर्ड जो है हम कल कर लेंगे। ये जो पीपीटी है दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट carkgupta.com, वहां पर आपको ये पीपीटी मिल जाएगी, तो वहां से आप ये पीपीटी देख सकते हैं, ठीक है जी। अभी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं, आपके कोई भी क्वेश्चन हो। नाउ रिकॉर्डिंग इज ऑफ।